Good afternoon, everyone. This is Kron this side, and I am again live. Today's topic is there in a description box. Love and sex are they the same words? As per me, that is not, but that could be, and those are not independent. सेक्स के बिना प्यार अधूरा है, लेकिन सेक्स कैन बी डन विदाउट लव एज वेल. तो इसके बारे में बात करने के लिए आई हैव अ साइकियाट्रिस्ट राइट नाउ. तो सोसाइटी में क्या चल रहा है इसके बारे में बात जरूर हम करेंगे. और लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर दीपाली बेदी राइट नाउ, द साइकोलॉजिस्ट, जिनके साथ हमारा तो आज का जो है लव एंड सेक्स आर दे द सेम थिंग. लेट्स टॉक अबाउट इट. सो मैंने कोशिश किया है एंड हियर शी इज. हेलो. Yep. Hi. So interesting. So Let's today's see topic is where. आई नो. कल के जो मतलब कमेंट्स आए थे उससे इंस्पायर हो गए हम एक्चुअली. Absolutely. तो एब्सोल्युटली. सो लव सेक्स एंड धोखा, ये धोखा है कि क्या है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले जो मेरा जो सोच है उसके बारे में मैं जरा क्लियर कर लेता हूँ दीपाली मैम. वो ये है कि लव इज इनकम्प्लीट विदाउट सेक्स, but sex can be done without love. That is the fact of the society. And nowadays there has a new terminology. I don't know you are aware or not. I don't know. There is a called a sex buddy. So there is no emotional connection. Just for the fun purpose, we are using our best buddies, or could be like buddies only. Yeah. So there is no Yeah. commitment. There is nothing like that. Nothing to do with live-in relationship or something like that. This is just the fulfill the desire or the physical attraction. That's it. So what really is a society thinking about this particular fact जो कि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. Please continue. Okay. Interestingly, how we be all being animals. Ultimately, इंसान एक जानवर है, and thus is our sexual needs. So there are sexual needs for sure in individuals, which can be varied based on an individual, which is a biological need. जैसे भूख लगती है वैसे सेक्स की नीड होती है. सिंपल. इंटरेस्टिंगली अगर हम फिजिकल नीड की बात कर रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल नीड है, तो क्या हमें सेक्स की नीड पूरी करने के लिए एक दूसरा बंदा चाहिए? मेल के लिए इजैकुलेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैस्टरबेशन में कर सकता है. सो लॉट ऑफ फिजिकल नीड आपकी काफी हद तक आप कहीं ना कहीं फिजिकली अपने आप पे कंप्लीट कर सकते हो. यू डोंट नीड द अदर पार्टनर. सिंपल. So Absolutely. sex need can quite a lot be taken care of by masturbation, which interestingly our society doesn't talk much about. और आधे culture उसको taboo area में भी लाते हैं, which is sad. बिल्कुल. Because जैसे भूख लगती है आपको सेक्स की नीड हो सकती है, वो काफी हद तक अगर वो सिर्फ पेट की नीड है. देखो जैसे कहा जाता है अगर अल्कोहल की भी नीड एक सिर्फ एक साइकोलॉजिकल उसकी नीड होती है, एक मतलब अगर हम एडिक्ट की बात कर रहे हैं, और एक होती है बायोलॉजिकल नीड. तो बायोलॉजिकल नीड जो है सेक्स की जो है वो काफी हद तक मैस्टरबेशन से पूरी हो सकती है. बट द नीड फॉर द अदर पार्टनर इज मोर ऑफ एन इमोशन. हमें एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए एक पार्टनर चाहिए होता है. वो चाहे इमोशन ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ वो इमोशंस हो सकते हैं. कहीं ना कहीं कई बार सिर्फ आदमी, that's why I was talking of the toxic masculinity. Boys might need want to just do it with another person. I'll not say male or female, but to do it with another person to more feel connected or more feel satisfied that I as a man could do my have sex with the other partner. So this is an emotional need. This is not a physical need. Absolutely. So somewhere down the line, Absolutely. we are mixing that up. अगर प्योर सेक्स की नीड हो वो एज अ मास्टरबेशन में पूरी हो सकती है, बायोलॉजिकल नीड पूरी हो सकती है. अगर हम कहीं ना कहीं दूसरे की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इमोशंस में आ रहे हैं. वो बेसिकली हमारी साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स की बात है. सो इमोशनल नीड्स कई तरीके से पूरी हो सकती है.
it might not be just love, it might just be lust also. It might just be a physical attraction. So there could be various different, and that's why the sex buddy is coming up as a concept. That it's just an understanding that certain means if both are interested at certain times that they can have just sex with one another, there were no strings attached. So that's why this concept is coming up. बट वी हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि कहीं ना कहीं हम जब भी सेक्स की बात करते हैं और किसी पार्टनर के साथ में करते हैं वहां पे कहीं ना कहीं इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और इमोशनल अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इट शुड बी एट एनी कॉस्ट इट शुड बी कंसेंट ऑफ द बोथ बिकॉज कहीं ना कहीं अब नहीं तो दूसरे को अब्यूज कर रहे हो. So true. So it might be with anybody. It could be with anybody, anything. It has to be, if the other person is involved, it has to be consent. There has to be a consent which is involved in it. Because it is ultimately an emotional need, unless that emotional need is to, मतलब देखो कईयों को ये भी होता है कि मुझे गुस्सा दिखाना है किसी के ऊपर. So गुस्सा is in a way an abuse. So some people do have sex with, which is rape, is basically abuse. Is an aggression towards the partner. So that's what, when we are involving the partner, we are basically having different emotions. It might not just be love, it would be aggression, it could be a lot of other emotions. It could sometimes be sympathy, it could be sometimes, a lot of emotions actually can be seen in a sexual relationship between the partners. So we should differentiate that, because physical need हमारी masturbation से काफी हद तक पूरी हो जाती है. बाकी being human beings, we need the partner to basically express ourselves, to connect. So this connection can be formed. So connection, where we are talking of connection, we are talking of emotions. We are not talking of physical need. So this is the emotional need. One has to be careful of what the partner needs. You have talked about sex buddies. I would like to also bring up the concept of the aspect of one is different kind of needs of the other. Because अगर हम कह रहे हैं कि इसमें इमोशनल नीड्स हैं तो इमोशनल नीड दोनों की हमेशा एक नहीं होगी. हर बंदा रिलेशनशिप में डिफरेंट चीजें चाहता है. तो रिलेशनशिप में डिफरेंट चीजें चाहने की वजह से कहीं ना कहीं इसीलिए शायद आजकल के सेक्सुअल रिलेशनशिप में चाहे उसमें वेरिएशन ज्यादा आ गई है, लोग पर बात करते हैं कि मुझे ये चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए इसमें से. बिकॉज इंटरेस्टिंगली अदरवाइज हमारे कन्वेंशनल फॉर्म में तो कहीं वो डिस्कशन होती नहीं थी, ऑल्दो कहीं ना कहीं वो वेरिएशन शुरू से रहा है. इंडीड मैंने खुद एक रिसर्च वर्क किया था अपने एमफिल के टाइम पे, विच इज 2011-12 2010-11. उसमें मैंने लव रिलेशनशिप्स के ऊपर काम किया था, एंड आई हैड कंपेयर्ड इट विद अटैचमेंट्स एंड आई कंपेयर्ड इट विद अर्ली अटैचमेंट्स, एडल्ट अटैचमेंट्स एंड लव रिलेशनशिप्स. सो अगर मैंने रिसर्च किया, डाटा अंडरस्टैंड किए, तो थ्योरेटिकली मोटा मोटा ये कहा जाता है अराउंड 6-7 तरीके के प्यार होते हैं. There are 5, some talk about 5, some talk about 6, or some talk about 7, so approximately that. The theory which I was following, they were talking of 6 kind of love. So प्यार एक्सप्रेस करने का और उसको समझने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है. मैं उस रिसर्च को कहीं ना कहीं इसमें इसलिए भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इंडियन पॉपुलेशन पे किया था. तो इंडियन पॉपुलेशन पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि हम लोग ये मानते हैं कि अगर लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, so we should understand that when we are talking of love in form of a relationship, we are talking of the relationship per se. So इंडिया में लव रिलेशनशिप में बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में दोस्ती बनती है. ये काफी ज्यादा मूवीज ने भी डिपिक्ट किया हुआ है. आई थिंक कहीं ना कहीं अगर राधा कृष्ण की स्टोरी देखी जाए तो वो भी यही बात करती है कि इट इज अबाउट it is about attraction, it's about friendship, it is about a lot of other aspects. So Indian population, Indians see when they're looking for partners, they are actually looking for a lot of friendship in that. Then it could be indeed India में logical relationships बहुत ज्यादा दिखने को मिले
कि इंडिया में पार्टनर चूज करने से पहले ये देखा जाता है कि उसकी हैसियत मेरे जितनी है कि नहीं है, हमारे कल्चर में से है कि नहीं है। इंटरेस्टिंगली वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिला, तो वो हम लोग उसको ब्रॉडर कैटेगरी जो आता है लॉजिकल लव, कि हम लोग बेसिकली ये सोचते हैं कि ये किस तरीके से रिश्ता जाएगा, उस बेसिस पे हम रिश्ता बनाते हैं। फिर गेम प्लेइंग भी इंटरेस्टिंगली काफी दिखा, जो कि है कि बेसिकली क्योंकि हम इनसिक्योर्ड हैं, हम करीब भी जाना चाहते हैं और नहीं भी जाना चाहते हैं, विच इज सैड बिकॉज इंटरेस्टिंगली हम उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाते, हम बेसिकली खेलते रहते हैं उस रिश्ते में। ऑब्वियसली अगर हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो पोजेशन की बात कर रहे हैं, पोजेसिव लव विच इज अबाउट गेटिंग द पर्सन, होल्डिंग ऑन टू द पर्सन। कहीं ना कहीं इंडिया में फीमेल को तो पोजेस करने की थ्योरी पूरी की पूरी शादी की थ्योरी बनी वहां से थी कि औरत को हम पोजेस कर लेंगे, उसके बाद में हम इसके साथ में कुछ भी करेंगे। सो दैट कंसेप्ट केम फ्रॉम देयर। प्रॉपर्टी बन जाएगी, प्रॉपर्टी, हाँ, वो पोजेसिव लव इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी ओनली व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। अनकंडीशनल लव जो कि हम मीरा की कहानी में सुनते हैं, मीरा हैड अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा विद नो nothing expected in return. So the whole concept of unselfish love, which we actually expect a lot from the other partner, but obviously it is not that easy to give in, because but kahin na kahin काफी हद तक फीमेल्स को अनसेल्फिशली लव करने के लिए सिखाया जाता है इंडियन सोसाइटी में, दैट द मैन्स नीड इज प्योर, यू शुड लव हिम विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। सो इंडीड यहाँ से वो कंसेप्ट आता है कि बेसिकली शायद ये सोसाइटी का कंसेप्ट वहीं से आता है कि मेल डिजायर इज इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट द फीमेल डिजायर व्हिच इज इम्पोर्टेंट। So when we are talking of love, we should always remember it is a relationship that we are talking of. When we are talking of sex, we are talking of the physical need, which basically can be fulfilled by masturbation. Period. There's no doubt around it. When we are getting into a relationship, we are talking of the other. So if we are talking of the other, then obviously there are other things which are involved कि उसका consent है नहीं है, aggression निकाल रहे हो कि actually कहीं से what exactly are you expecting in that relationship, वो matter करता है। So that's the play between the love and the sex. बट एक चीज है, अगर आपको याद है तो फिर डू यू रिमेम्बर दैट जब वी मेट होटल डिसेंट, वहां पे अगर मैं सिनेरियो चेंज के बारे में बात करूं तो मुझे बहुत एक क्रूशियल थिंग था जिससे ना 2 जनरेशन का चेंजेस मुझे समझ में आया था कि आपको रूम घंटे के हिसाब से चाहिए या फिर पूरी रात के लिए चाहिए, उस बात पे लड़की ने बहुत सिंपली बोली थी कि नहीं, हम तो घंटे के हिसाब से ही लेते हैं क्योंकि उतनी देर की जरूरत है नहीं। लेकिन आप सोचो, तभी से एक माइंड सेट हो गया है कि भैया मतलब घंटे के हिसाब से भी रूम मिल सकते हैं, एंड फॉर व्हाट रीजन। नॉर्मली अगर कहीं पे हमें जाना है तो 2 घंटे के लिए हम रूम ले सकते हैं फॉर द रिफ्रेशमेंट, लेकिन वहां पे जबकि कपल दिखाया गया, वहां पे एक ही स्ट्राइक किया फॉर द यंग जनरेशन, चलो जी ये तो हो सकता है। और मुझे जहां तक लगता है ओयो का कॉन्सेप्ट इसी हिसाब से आया है मार्केट में, एंड दैट इज ह्यूजली रनिंग बिटवीन द कपल। लेकिन मैं अगर उससे पहले की बात करूं तो मैं shall I? Yeah, sure, continue. Okay. तो तब हमने सुना था कि काफी लोगों के बीच में रिलेशनशिप था, 10 साल हो गए थे उनको प्यार के लिए, उसके बाद उन्होंने शादी किया है, देन वी बीन इंटीमेट एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन आजकल मुझे जहां तक लगता है, व्हाट एवर आई हैव सीन लाइक नियर बाय आसपास के रिलेशनशिप में, विद इन डे और 2 दे आर गेटिंग इंटीमेट। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि इफ वी आर कंफर्टेबल फॉर द ACX for each other, then we can go for LIFE. So it is like mandatory nowadays. So for love, the sex is important factor. For sex, love is that not important factor nowadays. So how you really define these changes in the society? See, I would not agree with the fact that पहले relationship जल्दी नहीं grow करता था कई जगहों पे। Yes, comparatively
रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थी, एंड इसीलिए चीजें शायद, देखो आई रिमेम्बर हमारे टाइम पे व्हेन आई वाज यंगर, आई नो देयर वाज अ कंसेप्ट के जो दोस्त मेल का जो दोस्त सिंगल रह रहा है उसकी घर की चाबी सबको, इंडीड दिस इज कवर्ड इन द मूवी, व्हाट इज दैट, लाइफ इन अ मेट्रो. So the keys of that house would be available for everybody. So पहले भी होता था, पर वही है, पहले आसानी से वो स्पेसेस मिल नहीं पाते थे, बट डजंट मीन स्पेसेस फिर ढूंढे नहीं जाते थे, स्पेसेस ढूंढे जाते थे. There would be places, and indeed शायद हम लोगों को भी पता होता था कि कौन से स्पेसेस. इंडीड जो पूरा यूपी गवर्नमेंट ने वो कंसेप्ट निकाला था कि पार्क में कपल्स नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि पार्क जाने का मतलब आधे टाइम पे यही कहा जाता था, पेड़ के पीछे. इंडीड अगर आप अमिताभ बच्चन की और अमिताभ बच्चन की आई थिंक मूवीज थोड़ी सी एंगर साइड पे ज्यादा रहती है, बट अगर आप धर्मेंद्र वगैरह की मूवीज देखो, यू विल फाइंड दैट बिहाइंड द ट्री सीन जो अंडरस्टैंडिंग था कि बेसिकली इट्स लव मेकिंग सीन. So there were spaces. Yeah, the spaces were not that closed. They were not completely, indeed more secured. अब सिक्योरिटी मिल गई है, आपको एक बंद कमरा मिलता है जिसमें करो जो करना है. Which is in a way, that doesn't mean that people all have started saying that only sex is the way of going ahead in relationship. They are, even till date we find people which they come and say that we might have not had sex till now or something. And on the other side, hearing around a 12-year girl or a 12-year guy talking about sex is also common, both the sides. So everything happens. Yeah, comparatively sex is become a common topic. It's because we hear more. Indeed, I remember a colleague and a friend of mine who had said that she might have experimented with sex at a very early age. जब basically वो book में she said वो chapters पढ़े, so we wanted to understand what is it, so wanted to experiment it, and we did. So so it is not today's theory. उस टाइम पे बात की नहीं जाती थी, लोग बताते नहीं थे. इंडियन हम लोग मजाक तो करते हैं कि अगर स्टडीज में ये कहते हैं कि इतने % लड़के आर सेक्सुअली एक्टिव बिफोर मैरिज, वो अल्टीमेटली एक्टिव तो लड़की के साथ में है जो एटलीस्ट हेटेरो है. So where are the girls? Why are the girls not talking about it? So indeed the whole concept of sex workers came into picture because of that. It was ultimately sex worker का भी concept क्या है, वो एक तरह का जो proper sex work में है, they provide the space also, they provide the person a space also that we can have sex over here. So I think yes, there is change. I'm not saying there's 0% change, but is there such a huge drastic change that in terms of premarital sex or something? To some bit not so much, because there were people who were even earlier experimenting with sex. So we are missing on that idea. So I would not completely agree to the whole idea that basically OA rooms वालों ने facilitate कर दिया है ये. Facilitate पर्सन ने जिसने ढूंढा उसने वैसे भी उसने जिसने ढूंढा ही ढूंढा. We'll figure it out. So it's as simple as that. वो पहले नहीं रहता था. इंडीड अगर आप उसका कहानी इंटरेस्टिंगली, अगर आपको डिसेंट का याद आया, उसके बाद में सेकंड पार्ट जो रहता है गन्ने के खेत का भी रहता है उसमें मूवी में, गन्ने के खेत पे नहीं जाना. गन्ने का खेत इज अगेन टॉकिंग अबाउट द सेक्स. एब्सोल्युटली. तो यही है कि मतलब पहले भी होता था, लेकिन दैट वाज नॉट इन अ वाइल्ड वे. पीपल नेवर यूज्ड टू टॉक अबाउट इट. नाउ पीपल्स आर लाइक they are open enough to discuss their desire, I think, and that is the reason we can talk that there is a sex is open now. It is an open market. We are not talking about it openly, we cannot discuss about it, but yes, whoever is required, they can express that and they can have the particular thing. लेकिन अगर मैं प्यार की बात करूं तो प्यार तो बहुत ही एक एक्सक्लूसिव मतलब डिजायर है नाउ इट इज. मतलब यू कैन फाइंड सेक्स इजिली बट यू कैन नॉट फाइंड द लव सो इजिली. सो ये क्यों हो रहा है? मतलब लोग कमिटमेंट के लिए, मैं पहले भी ये बातें कर चुका हूं,
लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आई हैव सीन, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द रेड लाइट एरिया, सेक्स वर्कर के साथ बात करना, यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो रेड लाइट एरिया है एशिया का, वहां पे भी हम लोग गए थे टू टॉक अबाउट देम एंड टू थिंक, टू टेक सम पिक्चर्स अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ देम. So there are few customers, they are fixed for this particular lady and they don't want to go for any other ladies. So is there any attract? That is not love. We cannot say love. I don't know. That could be love also from the other side, but they are not able to express that. That could be the possibility also. That अगर मैंने express कर दिया बाबा ये तो गले पड़ जाएगी, मतलब जो मुझे बोला गया, जो मुझे समझाया गया. देखो अगर हमें आके कोई बोलता है कि चलो जी मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उनको डर लगता है कि शायद हमारे जैसे लोगों को यहाँ से उठा के घर पे लेके जाना पड़ेगा, इसलिए भी लोग नहीं बोलते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते. लेकिन प्यार तो है. नहीं तो बात करके अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, तो 2 बार कॉल करके मुझसे पूछते नहीं कि तुम्हारा तबीयत खराब है या नहीं, आज काम मत करना, डोंट 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 स्लीप विथ एनी अदर गाइज. तो ये केयरनेस क्यों है? इफ दैट इज अ जेलस ऑल्सो, देयर आर सम लव इज लाइक देयर इनसाइड ऑल्सो, वी कैन थिंक अबाउट इट. लेकिन एक्सप्रेसिव See, लव नहीं मिलता है. हम्म See, interestingly, हम जब लव की बात करते हैं, इट कैन बी एक्सप्लेन डिफरेंटली. डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ लव. तो शायद हम लोग लव में काफी हद तक इंडियन कल्चर में कम से कम शादी बीच में इन्वॉल्व करते हैं, इसीलिए दैट व्हाई यू आर टॉकिंग ऑफ, विल शी आस्क फॉर यू टू गेट टेक मी टू योर हाउस. सो कहीं ना कहीं हम वो ट्रिक फैक्टर ऐड करते हैं. बट अटैचमेंट, ऑब्वियसली इट कुड बी एन इमोशनल अटैचमेंट ऑल्सो. Interestingly, I'll quote you an example of one of my case where and which is a generic thing. इसमें discussion हुआ था इसलिए मैं इसको quote कर रही हूँ, और ये दिमाग में आ गया इसलिए quote कर रही हूँ. This person had come to me because of having issues in his marriage with his wife, who was otherwise nice. He would feel that she's ready to give in whatever he wants, and Indian concept of being nice, so not very selfless, very loving, very caring sort of a thing. But this person came to me with the guilt that I don't feel attracted to her so much. When I'm even sexually involved with her, I keep remembering my old partner. So फुल गिल्ट ट्रिप के मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड याद आती है, शादी से पहले वाली गर्लफ्रेंड याद आती है. आई कैन नॉट बेसिकली परफॉर्म विद दिस वन. एंड बेसिकली द होल गिल्ट ट्रिप ही हैड कम विद. सो वी फॉरगेट दैट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ, इसीलिए मैंने ये सेशन शुरू करते ही ये कहा कि बेसिकली लव में 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, और 2 इंडिविजुअल जहां पे इन्वॉल्व है वहां पे इमोशंस इन्वॉल्व है. तो जहां पे इवन द सेक्सुअल प्रोसेस, everybody has a different way of expressing sexually their love. Simple. Everybody behaves differently in bed. There could be minor differences. Absolutely. Which cannot be taught to the person. आप किसी को exactly किसी और की तरह सेक्स करना नहीं सिखा सकते हो, बिकॉज इतने लेवल पे आप सेक्सुअली एक्टिव के टाइम पे आप इतनी लेवल पे बिहेव कर रहे होते हो कि उसको किसी को समझा पाना, किसी को एग्जैक्टली उसको रिपीट कर पाना, उसको रिप्लेस कर पाना पॉसिबल नहीं है. सो एग्जैक्टली वो आपको अटैचमेंट जब आप दूसरे के साथ में इन्वॉल्व हो, एग्जैक्टली आपको वो रिलेशनशिप किसी और के साथ में नहीं मिलेगा. सो व्हेन देयर इज अ पार्टनर, देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ इमोशन व्हिच इज इन्वॉल्व. तो वही तो कह रही हूँ, अगर जो पर्सन अब्यूज भी करता है, जो रेप भी करता है, तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन इन्वॉल्व है. सो इट इज नॉट विदाउट एन इमोशन. So even when you're getting involved with a sex worker, there is emotions which are involved. And if that emotion is fulfilling some need of yours, you won't want to go to the same partner over and over again. Indeed, I think even I have worked with people who might be going to sex partners or stuff like that. Or over here, the massage parlors, which are basically sexually oriented, they preferably go to the same parlors again, they go to the same person again. So there are all emotions that come into the picture. पूरे के पूरे वहां पे इमोशनल, अब जब दूसरा बंदा इन्वॉल्व है, इमोशंस आएंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए. बिल्कुल
ऑल बिल्कुल द अटैचमेंट का बिल्कुल कंसेप्ट मतलब वहां पे हर जगह पे एक अटैचमेंट होगा ही होगा. आप indeed most of the people who go to partners, they don't change partners very means it is not like one day. frequently. And if the person is doing that, one needs to understand this whole pinning. Okay, coming back to where I was like, we Hmm. need to understand that, if the person is changing so much of partners, what is the person's need that, itne partners kyun chahiye? Why cannot I just stick to one? Commitment issue Hmm. hai, rejection issue hai, kya issue hai? So, obviously there would be a lot of emotions that would come into picture. So that happens when one goes to anybody. So where there's another person, there are emotions involved. Okay. So the next, but the final topic could be like, जब जबकि मैं न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूँ, तो I know one of my like friend, and both of them are friend, and those are into a like distance relationship. Distance relationship मतलब वो relatives बनते हैं, कुछ कुछ दूर का रिश्तेदार है, उसका क्या इंग्लिश है मुझे नहीं पता. दूर का रिश्तेदार मतलब इंग्लिश में क्या होता है, वॉट एवर. तो वो लोग मिले, Some उनके cousin, बीच में some प्यार. cousin. Some cousins, yeah. So they are like involved, both of them are my friend. uh, जो गर्ल है, she don't want to like enforce the relationship tag in between this sex relationship, but the man is fully involved in this particular lady. He don't want to be with some other person. He don't want to get married, because he's like full on involved with this girl, and the girl is very much career oriented. She's divorcee. She don't want to tag this particular relationship. So this is something that let's come together today. I don't have any work, I don't have to go out. Let's have drinks and we can have whatever we feel like to do. लड़की आगे बढ़ रही है, लेकिन लड़का वहीं पे अटक गया है जहां पे उसने शुरुआत की थी. यहां से निकलने का क्या रास्ता है? अगर कुछ ऐसा है तो द मैन हैज टू कम आउट फ्रॉम दिस. He cannot think See, beyond this girl, and but the girl is very much like career oriented. She just want to have the like relaxation with this particular boy. Might have she will find some other person where once he will move out from this particular sex relationship. Then what is supposed to happen with this guy? क्या करना क्या चाहिए इसको? मैं पहले तो एक चीज कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में पड़ते हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ में हो, चाहे वो सेक्स रिलेशनशिप में हो, दोनों की नीड्स वांट्स अलग अलग हो सकती है. एंड दे आर बिल्कुल. यूजुअली डिफरेंट. दे कैन नॉट बी 100% ओवरलैपिंग. तो डिफरेंसेस होंगे. हम्म. कितने वहां पे हम नेगोशिएट कर पाते हैं और कितने नहीं कर पाते, वो ही एक्चुअल ट्रिक रहता है इस रिलेशनशिप का. कि इट्स लाइक एनी अदर रिलेशनशिप कि कहाँ पे अब ओवरलैप अपनी. इंडीड I think I think in one of the discussions only somebody had, no, it must not have happened over here. But, interestingly, it means people talking about that, my sexual desire is so much, but my partner doesn't reciprocate. So, this is something very common which comes. एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे दोनों के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स भी अलग हो सकते हैं. ये नहीं है कि आज सेम है तो कल नहीं अलग हो सकते हैं. इंडीड इसीलिए बिल्कुल शायद बिल्कुल. शादी निभानी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट मांगते हैं, बट लाइफ लॉन्ग हमारी जरूरतें बहुत अलग अलग हो सकती है. एंड दोनों की अलग अलग चेंज होने हो की सकती वजह है. से कई बार एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस. इसीलिए शायद हम लोग ये कहते हैं कि वी शुड इवन इन मैरिजेस वी शुड बी ओके विद द आइडिया ऑफ डाइवोर्सेस, बिकॉज कहीं ना कहीं और नीड्स कहीं ना कहीं डिफरेंट हो सकती है. यू माइट बी वांटिंग अ डिफरेंट पाथ. सो कहा देयर वुड बी डिफरेंस ऑफ पाथ. सो वन हैज टू अंडरस्टैंड, जो कि हम वही बात है. प्रॉब्लम ये है हम लोग इन चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं. अगर लड़के सेक्स की बात करते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब इट इज मोर अब्यूजिव. It is more with the idea that, I'll see how would you react. Would you be interested in having sex with me or not having sex with me? So, just throwing that, right, in a way, abusing the other person and wanting the relationship out of it. अदरवाइज हम लोग सेक्स के बारे में कितना कॉमनली बात कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज ये फैक्चुअल प्रॉब्लम्स है कि दोनों की डिजायर्स में डिफरेंस है.
उसके बावजूद कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे उस रिलेशनशिप को चलाना है कि अलग होना है, दैट इज अ ट्रिकी पार्ट. बिकॉज इंटरेस्टिंगली अगर वो आ भी रही है, दिस गर्ल इज कमिंग फॉर सेक्स विद दिस पार्टनर, she does get some kind of emotional support. So she also might not want him to go, but she doesn't want to get married to him because of the whole relationship, family problem which might be involved into it. The thought So, will become complete. Yeah. 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 So somewhere down the line, obviously there would be two different people having two different needs. इसमें ट्रिक होता ही होता है कि कौन कौन किस लेवल तक नेगोशिएट करके कहां तक कन्विंस कर सकते हो आप दूसरे को और कहां तक ला सकते हो. अगर शी इज नॉट कन्विंसेबल, अल्टीमेटली दिस मैन वुड एक्चुअली गेट हर्ट. कहीं ना कहीं वो इमोशनल, क्योंकि रिलेशनशिप में आखिर में क्या होता है, एक रिजेक्शन और हर्ट ही होता है ना. देयर वुड बी अ रिजेक्शन, देयर वुड बी अ हर्ट, एंड दिस इज व्हाट इज लाइफ. देन द पर्सन वुड हैव टू, अगर खुद नहीं उसमें से निकल रहा किसी ना किसी स्टेज पे, तो वो निकल जाएगी. If she's wanting to move ahead, or she might linger on this relationship. That's how it would be. So, but ultimately there would be a hurt involved into it. क्योंकि आपकी अगर ज्यादातर जरूरतें नहीं पूरी हो रही है रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं हर्ट भी होगा ना, उतना रिजेक्शन और हर्ट भी होगा. So obviously there would be that. So it is about, coming out of any relationship which is not giving you what you want. So true. So the gist of the story has become that there is some emotion is involved in the story of sex, but that could be a different side of love, not exactly the love, but there should be a emotion. And emotion अगर है तो फिर इस emotion को we should respect the emotion and we should keep it up. But like I am randomly I'm going to everyone to just to have sex is not a good idea, of course, because आपको कहीं ना कहीं पे आके अपने दिल की बात भी सुननी पड़ेगी. You have to stop somewhere. You cannot run away from one place to another place. If you are doing so, then also you need a psychiatrist. If you are not doing so, then you have to think about your life. And the psychiatrist, Dr. Dipali Bedi, is right now with us, and she will be there for you all around. And the number will be there in the description box. And this is a wonderful discussion what we had today. But we can say sex is a requirement, is a physical requirement. If we are doing so, there is nothing harm in it, till the time it is not hurting anybody. So we have to think it 10 times before having sex. But love should be love. That is very expensive. That you cannot find it in the market. So keep that in a deserved way and store it in your life, because that would be the complete ultimate. That is the ultimate stock which you will like preserve for the lifetime. So that is it, I can say. रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो. बट कल जो बात होगी वो एक रिसेंट टॉपिक के ऊपर होगी, जो कि कल मैंने एक लाइव सेशन देखा ऑफ 6 जेंडर पीपल और ट्रांसजेंडर. शी वांट टू बी अ गर्ल because of a man, and the man is a doctor. Man is a doctor who really commit throughout her that be complete woman, I will marry you. Be complete woman, I will marry you. And this boy trying to be a girl day by day, and suddenly he came to know the doctor is already married and he got a 10 years old child. Now she is completely down nowadays. She's about to go for suicide and this and that. So what will be the mental condition for this kind of relationship? We will definitely talk about it tomorrow. So tomorrow, sure, Sunday, but still we will talk about this sensitive session. And for the day, this love, sex, and no more dhoka will be is end up right now. Thank you so much, Dipali ma'am. Thanks for being with us. Thanks a lot. Wish you all the best. Thank you.